कि you can never make money out of borrowed conviction. Conviction comes from knowledge and hard work. तो आप how can I ask किसी से मैं टिप लेके पैसा कैसे बना सकता हूँ, तो वो बनेगा ही नहीं कभी. तो कहने का मतलब अगर आपको काम करना है, इसको अगर फुल टाइम करियर इन्वेस्टिंग चूज करना है तो उसमें आप अपनों को मेहनत करनी पड़ेगी. और अगर आपको ये एज ए इन्वेस्टमेंट, साइड इन्वेस्टमेंट, और अगर आपको, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए और उसको आप फिर दूर देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि वो कैपिटल आपकी धीरे धीरे कंपाउंड होगी. और जो हमने देखा है 20 सालों में 20 गुना हो चुकी है काफी लोगों की, वो धीरे धीरे कंपाउंडिंग होती रहती है. तो बहुत अच्छी है. एक पावर ऑफ जो कंपाउंडिंग हम बोलते हैं, उनको लग रहा है कि इक्विटी से आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल डेट से पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है, दैट इट सेल्फ हैज़ गॉट रिमूव फ्रॉम आवर कम्युनिकेशन. तो फर्स्ट थिंग विच वी टॉक इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग is available both in equity and debt. Now, if the power of compounding is convinced and it's important to all of us to have understood, then what does debt fund do to all of us? Debt fund is basically आप जब पैसा देते हो in a debt fund, it invests into bank deposits, it invests into government securities, it invests into corporate bond जो आप ढूंढते हो. और मोस्ट ऑफ द डिपॉजिट्स इन इंडिया आर फॉर 1 year, 2 year, 3 year. उसके बियॉन्ड होते नहीं, बिकॉज रोल ओवर का एक बड़ा हैंगओवर है इंडिया में लोगों का. पीपल वांट टू रोल ओवर फॉर वॉट एवर रीजन. बट इन डेट म्यूचुअल फंड्स वो जो एक्टिविटी फंड मैनेजर करता है वो कर रहा है. दैट्स हिज जॉब टू आइडेंटिफाई द बेस्ट पोर्टफोलियो, मार्क टू मार्केट. वो सब कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है, हमको उसमें जाना नहीं है. तो इफ़ यू स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग, power of compounding, getting the best portfolio, and your returns being secured for a long period of time, that happens. I think the best investors, at least in the Indian markets, have been the guys who have actually forgotten their money. पैसा पड़ा रहा है 10 साल तक, and suddenly when they open their folio and they see, oh wow, this has become 6x. So I just had an aunt last week who basically said, Saurabh, I don't remember 2013-14 में तेरे फंड में डाला था, है कि नहीं पैसा? So I asked my customer service to take out her folio and I sent it to her. And it was exactly 11 years, 2014 when she had put it. And the fund has grown exactly 6.5x. And she was so happy. She said that, look, I couldn't have thought about it in this fashion. And it's not even like a mid and small cap fund. It's a normal, my flagship contra fund, where she's put in that money. So I think a lot of people who have put in for the long term and when they've forgotten about it, they have made far more money at times than people perhaps who have kept on churning it every 2-3 years. Because then you are only chasing the winners, and you never know that the winner of last year may not be the winner for the future.